Yes, so I mean that story was quite something. Quite something is an understatement, but for the lack of better words, उतना ही बोलूंगा मैं. But I think मेरा experience थोड़ा अलग direction में रहा है. So when you say that जब भी तुम्हारे sort of be it a home state or a home country जिससे बाहर जाते हो, so there is this exchange between you and the people who live there. So sometimes you can see कि culture में differences क्या है, you embrace it, you learn from it, वो चीजें तो है ही definitely. But उससे भी ज्यादा एक चीज मुझे ज्यादा स्ट्राइक हुई है इनके इस चीज में, एंड अगेन माय एक्सपीरियंस इज सॉर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस यूएस वाले लेंस में. बट इन दिस केस व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज पीपल आर मच मोर सिमिलर देन वी थिंक वी आर. मतलब तुम किसी भी कंट्री के लोगों से मिलो. मैं मास्टर्स के लिए जब आया था, फर्स्ट एक्सपोजर था मेरा मेरा इंडिया के बाहर का. मेरे 60 लोगों के क्लास में आई वाज द ओनली इंडियन. There was one Indian in that class, that was me. There was one American. और टोटल आई थिंक 18 या 20 कंट्रीज में से लोग थे. 60 लोग 18 या 20 कंट्रीज में से, इतनी डाइवर्सिटी थी. बट इवन विद इन आवरसेल्व्स जैसे बात करते थे, ठीक है तुम्हें कल्चरल डिफरेंसेस दिखते तो है ही, बट बेसिकली बिलो दैट यू सी कि अल्टीमेटली सब लोग सेम है. मतलब हमें जो चीजें पसंद आती है उन्हें भी वही चीजें पसंद आती है, हमें जो चीजें नहीं पसंद आती उनका भी सेम रहता है. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैवल एंड हाउ इट मेक्स अस हैप्पी. मतलब हर एक का अपना अपना वर्जन रहता है, बट अल्टीमेटली एवरीबॉडी वांट्स टू ट्रैवल. लाइक मेरा फर्स्ट विंटर जो था, मेरे एक क्लासमेट ने मुझे ऑलमोस्ट आधे यूएस की रोड ट्रिप करा दी थी. एट दैट टाइम आई डिड नॉट नो हाउ टू ड्राइव देयर. मेरे पास लाइसेंस नहीं था, कुछ नहीं था. वो एक बंदे ने लेके मुझे पूरा रॉकी माउंटेन्स और येलोस्टोन और वो सब एरिया घुमाया था विंटर में. आई लिटरली वोर sort of the snow pants of somebody else. I wore shoes of somebody else क्योंकि मेरे पास गियर नहीं था, कुछ नहीं था. एंड दैट वाज वन ऑफ द ट्रिप जहाँ पे मैं ऐसे 10-12 अमेरिकन के साथ गया हूँ जिनसे मैं कभी मिला नहीं, जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई. वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल्स, बेसिकली फ्यू ऑफ द नाइसेस्ट पीपल आई हैव एवर मेट. और उनका भी उसमें वही था कि लाइक नंदिता सेड की व्हेन यू गो टू देयर कंट्री दे काइंड ऑफ फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मतलब तुम अच्छे से रहो, सेफ रहो. सो इन सम डायरेक्शन मेरा भी वही था, क्योंकि मैं एक अकेला 21 साल का बंदा था, वो सब मुझसे बड़े थे, दे हैड बीन देयर फॉर लॉन्ग टाइम. तो उन्होंने इतनी केयर की मेरी. तेरे पास ये नहीं है क्या, तुझे ये लेके देंगे, तुझे स्नो में चलने के लिए शूज चाहिए तो इसके शूज पहन, तेरा कोट अगर ठंडा नहीं रह रहा तो इसका कोट पहन. लाइक बेसिक थिंग्स लाइक दैट. बट थ्रू दैट मुझे वो चीजें इतनी समझ में आई कि इसके पैरेलल में इतने मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकता हूँ. जब तुम किसी छोटे गांव में जाते हो, किसी खेत में, या फिर देयर आर कपल ऑफ फैमिलीज जिनसे तुम्हारी बातें होती है, दे एसेंशियली डू द एग्जैक्ट सेम थिंग, राइट? अगर तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें खाना बना कर देंगे. अगर तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है, वो ठीक करके देंगे. सब लोग तुम्हारी मदद के लिए आ जाता है. सो बी इट just about just talking to somebody or just hanging out with somebody versus actually living with somebody or traveling with somebody, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वो जो सिमिलैरिटीज रहती है, वो इतने अलग कल्चर्स में इतने ज्यादा कॉमन पॉइंट्स मुझे दिखे हैं. एंड दैट हैज बीन वन ऑफ द sort of the best takeaway that I have gotten from my travel experiences up until now. कि जितने भी अलग अलग लोगों से मिला, एंड आई ऑलवेज फाइंड माई सेल्फ लकी इन द सेंस कि जहाँ भी मुझे लोग मिले, बीट रूममेट्स, बीट फ्रेंड्स, सब लोग अच्छे मिले. मेरा कभी एक्सपीरियंस सब बुरा नहीं रहा, किसी के साथ की झगड़े हो गए या फिर एनीथिंग लाइक दैट. सो आई ऑलवेज काउंट माई सेल्फ लकी ऑन दैट फ्रंट. बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीटिंग पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस, डिफरेंट रेसेस, जेंडर्स, बैकग्राउंड्स, मतलब एनीथिंग, जो सिमिलैरिटीज रहती है वो लाइक दे आर unmistakable. तुम्हें हमेशा वो दिख के आता ही है, and that kind of makes you feel sort of closer to the entire world in some sense is what I feel. यार मैंने एक नोटिस किया है कि जहाँ का खाना हम मतलब इंडियन इंडियन खाने से जहाँ का खाना सिमिलर है ना, वहां के लोग भी थोड़े से सिमिलर है इंडियन खाने से. आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस. लेकिन मतलब दे आर जस्ट मोर इमोशनल. तो आई डोंट नो इफ देयर इज अ लिंक और व्हाट. लेकिन यहाँ का जैसे मेरे को यहाँ के लोग नहीं उतने वार्म एम्पथेटिक लगते जितने मुझे इंडिया के लगते हैं.
और यहाँ का खाना भी वैसा ही है, थोड़ा सा ब्लैंड सा. So that's like one similarity I have seen. हम लोग लाइक मेक्सिको गए भाई, वहां का खाना एपिक है और वहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं. तो आई डोंट नो, लाइक देयर इज सम सिमिलैरिटी बिटवीन food and culture and like people behavior. Man, I never heard this parallel, but I think next time when I travel, I think I'll travel with this thought also in my head. ठीक है, तो तेरा कोई एक इंसिडेंट रह गया था बोलने का? हाँ, वो ऐसे ही फनी इंसिडेंट्स तुम लोग बात कर रहे हाँ हो. uh, अरे बहुत टाइम से हंसे नहीं हम लोग. हाँ. I think more than funny, it could be also relatable. So हम लोग बहुत छोटे थे. Maybe I was 10, my brother was 11, and we were a joint family. तो हम लोग बहुत घूमते थे और साथ में घूमते थे. तो स्टार्टिंग में अपन जब छोटे थे तब तो सबके पास मोस्टली टू व्हीलर्स थे. First time mama had bought a car, so we lived with mama, mami, and nana, nani, and my parents. So my mama had bought a car. It was a Maruti 800 second hand, and we were 8 people in the family, 2 kids and 6 adults, and we wanted to go to. So हम लोग का प्लान था गणपतिपुळे, पुणे, हरिहरेश्वर, भीमाशंकर, ऐसा पूरा. तो हम लोग 8 लोग मारुति 800 में फॉर 10 days पूरे घूमे हैं. एंड इमेजिन हाउ, would anybody want to take a guess? 2 बच्चे डिक्की में बैठ के. मेरा यही कह रहा था. हाँ, वेरी सिमिलर. मैं और डैड सामने के साइड सीट पे बैठते थे. मेरी मॉम एंड मामी एक दूसरे के मतलब मांडी पे बैठती थी, उलट पुलट के. ग्रैंड पेरेंट्स वर सिटिंग कंफर्टेबली, एंड मेरा भाई पूरा टाइम बेचारा डिक्की में, पूरा टाइम. डिक्की वाला तो 11-12 तक किया है मैंने. सो वेरी 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 रिलेटेबल. ओह, नहीं यार, मेरा मेरा लॉकडाउन के पास वाला एग्जांपल है. मैं मेरे मौसी के यहाँ पे एयरफोर्स बेस में रह रहा था, और वहां पे कोविड का फर्स्ट वेव था, तो अलाउड नहीं था लोगों को लाना. बट मेरे को स्मगलिंग कर लिया था, तो अब चेकिंग हो नहीं रही थी, तो मेरे को एक बार बाहर जाना पड़ा था डॉक्टर के पास. तो उनके पास एमजी हेक्टर थी, तो वो एमजी हेक्टर की डिक्की में मेरे को छुपा दिया प्रॉपरली अंदर. फिर मैं वहां पे गया कैंपस के बाहर, फिर निकाला, फिर डॉक्टर के पास गया, फिर वही स्पॉट पे वापस आए, फिर डिक्की में बैठा और फिर अंदर गया. तो या क्रिमिनल एक्टिविटी चेक. क्वाइट फनी. और ऑन द सेम लाइंस दूसरा किस्सा वाज मच लाइक व्हेन आई वाज मच एल्डर. आई थिंक फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज की बात है. हम लोग गए थे लेह लद्दाख, और खारदुंगला पास तो पता ही होगा सबको. इट्स लाइक द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन इंडिया. तो हम लोग फर्स्ट टाइम, आई नेवर सीन स्नो, तो हम लोग सब गए. वी वर अगेन 7 people बाय दैट टाइम, इंक्लूडिंग माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड फादर एट पास. सो हम लोग 7 लोग और 2 छोटी फैमिलीज थी. एंड वी हैड लाइक वी टुक अ मिनी बस फ्रॉम लेह लद्दाख का जो भी बेस था टू खारदुंगला, एंड वी वर रिटर्निंग. गए तो अमेजिंग स्नो, फर्स्ट टाइम इन लाइफ, बहुत मजा आया. फिर वापस आते समय, बिकॉज ऑफ द स्नो, एवरीथिंग बेसिकली लैंडस्लाइड हुआ था, एंड सारी गाड़ियां ब्लॉक थी. वी हर्ड, तो हम लोग बहुत टाइम ट्रैफिक में फंसे थे, एंड वी हर्ड कि सामने कहीं एक गाड़ी पलट गई है. एंड they didn't fall off, they like kind of, they can be saved still. तो हम लोग मतलब सारी गाड़ियां अटकी थी फॉर आई डोंट नो 5-6 hours. एंड देन एक आर्मी व्हीकल आई फाइनली टू ट्राई एंड रेस्क्यू देम. एंड बाय दैट टाइम लोग मतलब हम लोग थोड़ा सा उतर के देख रहे थे क्या कर सकते हैं टाइम पास. सब ट्रैफिक में फंसे हैं, और आर्मी का व्हीकल भी पलट गया. तो और लिटरली हमारे पास थोड़ा सा चिवड़ा, 7 लोग का फैमिली, थोड़ा सा चिवड़ा और थोड़ा सा पानी था. एवरीथिंग वाज आउट. सब लोग, इतनी ठंडी, नेगेटिव टेम्परेचर, सबको क्रेजी ठंडी लग रही है.
ऑक्सीजन का इशू, और सबकी फट रही है कि यार अगर और 6 घंटे 12 घंटे रहना पड़ा तो क्या ही करेंगे इतने ठंडी में, पानी खत्म है क्योंकि तो एंड लाइक रोड्स आर ब्लॉक, लाइक देयर इज नो वे ऑफ गोइंग डाउन, क्योंकि आर्मी एक आर्मी ट्रक पलटा तो ऑब्वियसली इट वाज अ बिग डील, तो सारे आर्मी के ट्रक्स आ गए और जो भी चल रहा था उनका। तो मेरा भाई, लाइक ही वाज अ टीनेजर, सो सामने वाले सामने वाले कार में देयर वर सम लाइक अदर ग्रुप जिसमें कुछ लड़कियां थी, तो हम लोग मस्त उनसे गप्पे मारे। वो he was enjoying their company, so he basically their car was smaller, तो he तो हम लोग फिर फाइनली जब थोड़ा सा गैप खुला तो वो लोग बोले कि मिनी बस तो नहीं जा सकती बट छोटे कार्स जा सकते हैं, तो मेरा भाई उनके साथ चला गया और हम लोग बाकी 6 लोग विथ सम अदर पीपल वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार अभी हम कैसे जाएंगे क्योंकि मिनी बस जा नहीं सकती। और हमको और अलग टेंशन कि भाई भाई कहाँ है, कहाँ जाएगा, उसको पता भी है क्या। फिर फाइनली वी आई डोंट नो, हम लोग सोचे पहले स्प्लिट होंगे, फिर किसी को इच्छा नहीं थी, पूरी फटी हुई थी, बट फाइनली वी सेड कि कोई एक कार आई विच वाज स्मॉल इनफ टू फिट 6 पीपल, तो हम लोग उसमें सब लोग 6 लोग गए और बहुत लेट पहुंचे क्योंकि वी हैड टू मूव वेरी स्लोली एंड केयरफुली। तो मेरा भाई पहुंचा था अराउंड 7 PM टू द होटल, बहुत ठंडी था, एंड हम लोग पहुंचे 10 बजे। 7 बजे से 10 बजे तक वो बाहर गेट पे, ऐसे गेट का साइड का पिलर रहता है ना, उस पे बैठ के रो रहा था कि आई डोंट नो वेयर माई फैमिली इज, बेचारा। बट या दैट्स लाइक अ क्रेजी एक्सपीरियंस that I can remember. So my most of my trips have been with family. So सारे crazy experiences भी Yeah, family के Nikita, I would have actually said there was light at the end of the tunnel for your brother, but he was crying at the end of the story. So I don't know how much it justifies. साथ। Yeah. नहीं नहीं सही है यानी मेरे को लगता है कि देयर आर वेरी गुड ट्रांजिशन बाय निकिता अगेन कि व्हाट ग्रुप वुड यू और व्हाट काइंड ऑफ ट्रैवल वुड यू लाइक टू प्रेफर, ऐसा वाला टॉपिक है। सो जैसे देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस राइट इन व्हिच यू कैन ट्रैवल। द फर्स्ट वन इज लाइक सोलो ट्रैवल, सेकंड इज विद like a spouse or somebody, and the third is family, family member जो निकिता ने बोला। fourth is with friends, friends का groups, and the last one is work travel. So मैं मेरा पर्सनल मेरा बचपन जो रहा है पूरा वो फैमिली ट्रैवल ही रहा है फॉर द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, विच आई हैव बीन वेरी लकी। मेरी मम्मी टीचर थी तो हमको हर यानी मेरे को और मेरी मम्मी को सेम टाइम छुट्टी रहती थी, तो वी यूज्ड टू गो एवरी समर एंड वी यूज्ड टू ट्रैवल लॉट ऑफ प्लेसेस इन एंड अराउंड इंडिया। बट हमारे घर वाले बहुत रिलीजियस लोग हैं, तो सारे देवस्थान रिलीजियस प्लेसेस पहले कवर होते थे और फिर आखिरी में टूरिस्ट प्लेसेस होती थी कि हाँ अभी देव दर्शन कर लिया, अभी आप थोड़ा मजा कर सकते हैं लाइफ में। तो ऐसा वैष्णो देवी ये सब करने के बाद फिर शिमला मनाली ऐसा। फिर जो अडल्ट टाइम था वो टाइम था पूरा दोस्तों के साथ वाला, अंडमान ट्रिप्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रिप्स, जो इस कॉल पे भी लोग हैं उनके साथ, वो अलग फन था वहां पे। स्कूबा डाइविंग, वो मोटर बोट वाला क्या बोलते हैं उसको, मोटर जेट स्की सॉरी सॉरी, तो जेट स्की पे घूम रहे थे तो वैसा। और उसके बाद वाला जो प्रॉब्लम है वो था मेरा पूरा वर्क ट्रैवल। सो मेरे को उस पर थोड़ा सा टच करना है कि इतना घूमना पड़ा है वर्क ट्रैवल में, इतना घूमना पड़ा है पैन इंडिया। लाइक मेरा एक इंटर्नशिप वाला पॉइंट था, उसमें मेरा सेल्स इंटर्नशिप था। मेरे गाइड ने मेरे को बोला कि तुम्हारे पास 6 हफ्ते हैं, 6 हफ्ते में एक तो मैं तुमको पूरा सेल्स सिखाऊंगा या फिर तुम यहाँ बैठ के एक्सेल बनाना, क्या करना है। मैं बोला मेरे को सेल्स सीखने का है, मैं पता नहीं था मेरे को क्या होने वाला आगे। तो ही गिव मी अ प्लान एंड देन ऐसा वहां से चालू करके नागपुर, औरंगाबाद, पुणे, पुणे आउटर, इधर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, अलीबाग, फिर उधर से ऊपर गए, फिर बोले अभी महाराष्ट्र खत्म हो गया, बोले थोड़ा तुम्हारा अभी कोई नीचे कोल्हापुर सोलापुर भी है। फिर उधर बोले गुजरात जाओ, तो गुजरात में वापी, नवसारी, ऐसा जाते 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 सूरत, अहमदाबाद, आनंद, ये 6 हफ्ते में मैं घूमा। तो मेरा ऐसा एक हिटमैन जैसे रहता ना मारने वाले, उनका जैसा शेड्यूल रहता था कि मैं मेरे भाई को बोलता था कि कहाँ पे जाना है, बोले सोलापुर, ठीक है। तो वो मेरे को शाम को सोलापुर की टिकट कर देता था बस की, मैं रात को सोलापुर को बैठता था, सुबह बैठता था,
सुबह पहुंचता था बस से, वहां पे होटल करता था, होटल में चेक इन किया, दिन भर काम करता था, फिर उसको कॉल करता था, अभी किधर, अभी तुळजापुर, ठीक है, तुळजापुर का बस बुक करता था, सेम शिट डिफरेंट डे. विदाउट दैट यू कैन नॉट कवर 20+ टाउन्स एंड विलेजेस इन 6 वीक्स. तो मेरा ये वर्क ट्रैवल वाला पॉइंट था. बट आई वुड लाइक टू ओपन दिस टू द ग्रुप की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैवल, वर्क ट्रैवल, फैमिली ट्रैवल, इन सब पे तुम्हारा क्या कहना है? For work out, not much. Apple का तो भी work China में with the factories, and hopefully India में जल्दी factories हो रहा है, so I get to travel to India as well, and Brazil hopefully soon. पर ऐसे work travel में इतना कुछ नहीं है, and like I got the China का visa ऐसे February of 2020 में, and I was supposed to travel February में, and फिर COVID हो गया एकदम फटाक से, तो and it started where you are going, तो काफी difficult था, तो that work trip got cancelled. तो वर्क के लिए तो इतना नहीं एक्सपीरियंस. हाउ अबाउट योर नंदित? आई थिंक एमबीए वाले लोग आर मोर इनटू. I think work travel I have had experience is only because I think again MBA marketing, it does not, it always goes hand in hand. Work travel and MBA marketing goes hand in hand, irrespective of you're in sales or not. So the profile that I was also in is product management. So I have to go meet customers and try and understand their requirement. So I've realized that you know, I think they just mentioned this, right? As much as we seem different from the outside, we're all the same at the end of the day. I think when you start going and pitching your products to customers and try and understand what the requirements are also within travel, you kind of understand like everybody has that one basic need, and everybody's ask is the same, that I need to do my business right. And you need to do business right because you need money. And at the end of the day, for you to run that life as comfortable as you think within your economy and within your country. So I think that has been great, I think. And other than that, work travel, I would say even within India, right? I've started feeling that work travel within India means not metro cities. It is always tier 2 cities or tier 3 cities. So, and because of pandemic also, I feel like I have traveled a lot, be it for work or be it on personal. I have actually started meeting friends in tier 2 and tier 3 cities than in metropolitan cities. And you kind of start exploring. Like, for example, one, Akola that I mentioned. Never did I ever think that I'll end up going to Akola for a wedding, that too in a train. And I have gone there. So a lot of these places, I feel like it is going to happen only on work travel, because there are cities like Kolhapur and Solapur that Vallabh was mentioning. I don't think so. As a person, if I ever want to do a solo travel or family travel or with friends, those are never the towns I would touch. I would never be like, you know, I want to go see how Solapur is. I want to go see a Solapur Mandir or something. But I think that window or like that experience, only a work can open up for you. Those very offbeat places. And I feel another places like Congo and stuff. Again, given an option to anybody, nobody's ever going to say, I want to travel to Congo to try and see how mines work. But that has happened with me, that you can go to Congo and you can actually see mines work and you'll actually see what the economy is all about. So I think work travel brings out like a different, if I may say, exit gate for your travel also, that you might have a plan for yourself and for your family and with your friends. Those untouched things can happen only within your work travel. I think that's what I have personally faced or like personally experienced within my work. Yeah. Talking about untouched things, it's like kabhi exploration karte karte, like we find a lot of random places. I remember one example. Say Chembekar found out about this place. It was like called Crater of the Moon, which was like we were actually went there to see Yellowstone on that trip and Grand Teton on that trip. And then there was this place called Crater of the Moon. I think Chembekar ne kisi se suna tha, I don't remember. And then hum log cha rahe the, like the pictures look really interesting. So it was like thoda off the way. It was triangular to the Grand Teton. And we drove like for 4-5 hours extra to that place. And हमने से random छोटा सा town था. It was called Arco. We booked like a छोटा सा motel जहाँ पे that is probably the only one of the only places to stay वहाँ पे. It was the closest one to the Crater of the Moon. And then वहाँ पे, like as soon as we got closer, we started seeing the signs. And the signs were like, that was the first town that was powered with nuclear power in the whole world. And like that was in the like nowhere. That was like just at a random place, and we didn't even realize that it was the first town which was powered by nuclear power. We were so surprised. Like गाड़ी से उतरे, गाड़ी parked on the side, उतरे, lots of pictures, सब जगह, like because that was the most famous thing for that छोटा सा town. So all the restaurants and all the buildings had that same sign on the place. This is the first nuclear powered town and so on.
So it was like very interesting find, and then very very interesting. And then next day we went to the crater of the moon, which was like even more strange place. I think Shemekar said they trained for like the moon landing and moonwalking on that place. So I say Kafi, it was like mostly the lava field which created all of those structures. And they had like lava tubes. We went down, you need a torch and everything to go there. It was very interesting, very weird place. And I don't think we find these places. I don't think we ever would travel just for Crater of the Moon. We would travel for Grand Teton, we would travel for Yellowstone, but not for particularly that place. That's So very true. weird, but good experience. हाँ मतलब इसमें बस एक चीज आई जस्ट कॉम्प्लीमेंट लाइक ऑब्वियसली लाइक वो प्लेसेस एंड ऑल तो वो वेयर द सर्च एंड फाइंड टाइप्स और वो मिल गया लाइक आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर प्लेसेस टू गो अराउंड वेयर वी कैन ऐड एंड जस्ट एक्सप्लोर आसपास तो मिल गया तो इट वाज फन लाइक हाँ जैसे काफी सारी फैंसी चीजें हुई हैं वहां पे दैट होल एरिया इज प्रीटी इन जनरल वो एरिया इज नोन फॉर नथिंग बट इट्स जस्ट अ वेरी फैसिनेटिंग एरिया और वो काफी अंडर अप्रिशिएटेड एरिया सो दैट वाज अ प्रीटी कूल प्लेस टू जस्ट एक्सप्लोर बट वहां से एक और चीज जो थी मेरे मतलब विच काइंड ऑफ स्टक टू मी वाज मतलब स्पेशली व्हेन यू हैव ट्रैवल्ड टू दी स्टेट्स ना जो द स्टेट्स व्हिच हैव थोड़ा बैड रेप लाइक एटलीस्ट हमारे साइकी में थोड़ा बैड रेप है कि वहां पे गन कंट्रोल मतलब इनडिस्क्रिमिनेट है मतलब वहां पे कोई गन कंट्रोल ही नहीं है ऐसा ऐसा वगैरह those places I found one of the most friendliest and nice people hosting you out. Like generally they have a bad rep about a lot of things. Like they treat foreigners thoda matlab they have a certain a lot of people say they have the undertone of racism या वैसा ऐसा काफी सारे ऐसे accusations होते हैं but ऐसी जगहों पे like when you visit such places you get to feel that kind of in a way hospitality like they do treat visitors really kindly maybe if you move in as a person to stay that might be a different perspective I don't know but when you're visiting such places now they do treat you with a lot of warmth like it was I know it was still covid चल रहा था like काफी omicron was just coming out and वो सब हो रहा था but उसके बाद भी like it was really like they were really friendly really cool in terms of how they were like hosting us talking to us taking us around so that was like really cool and we have a new visitor for the pod Kabir हाँ मैं वही बोल रहा था मैं स्विच आउट करता आई ब्रिंग इन वल्लभ और निकिता बट एक रिलेटेड टू व्हाट शेमबर्ड शेर सिंह बाय द वे कबीर सेज हाय टू एवरीवन तो जो लाइक कलर ऑफ द मून राइट कि देयर आर प्लेसेस सो आई डोंट नो इफ ऑल ऑफ यू हैव सीन दिस मूवी कॉल्ड द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी और उसमें काफी सही सीन है मतलब शॉन पेन का सो डू वॉच इट तो आई थिंक देयर आर टू ट्रैवलर्स एंड आई लाइक टू ब्रिंग इन द टॉपिक कि how has Instagram or social media impacted how we travel versus let's say how our parents travel. So just 1 second इसको मैं थोड़ा शांत कराता हूँ एडिट करना पड़ेगा शायद तो उसमें एक सीन है कि स्नो लेपर्ड्स बेसिकली दे आर सीन ओनली इन हिमालयस एंड दे आर कॉल्ड द घोस्ट कैट्स तो मतलब उसमें शॉन पेन एक्ट्स लाइक फोटोग्राफर बेसिकली तो एंड वॉल्टर मिटी इज द कैरेक्टर तो आई जस्ट क्विकली रैप दिस अप सो उसका एक कोट है which I think is very true. So beautiful things don't ask for attention. So like that is what the photographer says. So although he is a wildlife photographer, वो जब उसको घोस्ट कैट आता है like when he really sees that snow leopard, he keeps the camera down. And तो ये उसको बोलता है तो उसका फोटो क्यों नहीं खींच रहा तो वहां पे वो बोलता है कि sometimes like if I like a moment for me personally, I don't like to have the distraction of the camera. I just want to stay in it. So what I feel is I think जो इवन सर्वेश सही रहे कि लोगों के वीडियोस देखता हो तो आई थिंक व्हाट यू प्रेजेंट एज अ ट्रैवल वीडियो एंड व्हाट यू रियली ट्रैवल लाइक दोस आर टू वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस तो वो डिस्कस करना था बट हाँ हाउ इज इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया अफेक्टेड ट्रैवल लाइक हमने भी किया है एटलीस्ट इन आवर अर्ली चाइल्डहुड देयर वाज नो मतलब कैमरा के रील्स यूज्ड टू टेक ओनली 36 फोटोज पर वेकेशन एंड नाउ वी टेक 36 फोटोज इन अ बर्स्ट एंड उसमें से एक सिलेक्ट करते हैं तो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट विद टेक्नोलॉजी तो वो भी एक टच करना चाहूंगा I think photos के लिए like Instagram made really like a bad rep. No, not for the Instagram, but at least photos are important. I think like human memory is only capable of like a limited thing. So say like after 1 year, after 2 years, like I think that I like that feature the most in Facebook and Instagram and all these photos app. Ki after 2 years, it still shows you like chasing waterfalls, and I see the picture of Shembo in like inside the waterfall, and then there's like chasing sunsets, and I see the photo of someone like lying on the beach, seeing the sunset. I think those memories are like very important. So photos in general are very important, and I think there's also the story about Grand Canyon.
Okay, so it got famous because of Instagram. Like a lot of people Instagram. started going there, and then it became famous. So people started recognizing it, and we go to Grand Canyon because it got famous. So I think it has the positives, but like your focus shouldn't be Instagram on the trip. But I think Vallabh's focus is usually dancing on the beach. मतलब just So adding हाँ मतलब Nice job. I That was a I job. would actually like to sort of give a bigger perspective on this social media versus travel happiness वाला thing. मेरा actual ऐसा बड़े scale पे travel चालू हुआ after I came to the US. दोस्तों के साथ and exploring and road tripping and all those kinds of things. I came in the US in 2014. I think अपने बैच में या फिर अपने एज के लोगों में I was one of the first people जो कंट्री छोड़ा था उस वक्त. And at that time, I don't know if you guys remember, but Facebook was very big. मतलब लोग कहीं पे भी जा रहे हैं तो चेक इन डाल रहे हैं कि मतलब at the airport or traveling to XYZ or traveling to my with room. somebody at a restaurant. मतलब हर अपडेट Facebook पे जाता था. So Facebook was like a very hip thing at least then. तो उस वक्त मेरी बहुत चांदी थी क्योंकि मैं इतने अच्छे अच्छे जगह पे जा रहा था, यूएस के फोटोज डाल रहा था, लाइक्स आते थे एंड लाइक आई वाज वेरी हवा में था वो उस एक एस्पेक्ट पे मैं कि मतलब ऑफ कोर्स आई एंजॉय ट्रैवलिंग. लाइक आई डोंट थिंक इट अफेक्टेड टू द एक्सटेंट कि मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, बस फोटोज ले रहा हूँ. बट बहुत फोटोज निकालता था, बहुत फोटोज अपलोड करता था एंड दैट वाज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग एटलीस्ट देन. वैसा एक जगह पे लोग हफ्ता भर घूम के आके 50-60 फोटोज डालते थे लाइक इन दैट एरा बेसिकली. Album. Yeah, and now cut to 2022 or like 23 I should say. But even पिछले 2 से 3 सालों में मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस इतना कम हो गया है. Like at this point I use WhatsApp just for like very important इस चीज के लिए, मतलब घर वालों से बात करनी है या फिर दोस्तों से जो भी थोड़ी बहुत रहती है उतना. I haven't opened my Instagram in like couple of years. I haven't opened my Facebook for like 3 or 4 years now. And कुछ पोस्ट नहीं, कुछ नहीं. मैं ट्रैवल करने के लिए जाता हूँ, कितनी भी अच्छी जगह है. मैं अलास्का में गया था, नॉर्दर्न लाइट्स की फोटो खींची थी, ये बहुत कुछ किया. बट अभी ट्रैवल में जाता हूँ तो ऐसा मेरी खुद की फोटो खींचने का भी मुझे ऐसा बहुत ये नहीं रहता. लाइक व्हेन समबडी सेज कि मतलब कहीं पे जा रहे हो खुद की एक फोटो तो खींच लो लाइक एज अ सोवेनियर या फिर व्हाटएवर. मेरा उतना भी एंथु नहीं रहता. लाइक क्या फोटो खींचना है, मैं वो जो भी विस्टा रहेगा, सीन रहेगा, उसका फोटो खींच लूंगा. आई डोंट हैव दैट कंपल्शन कि हाँ मुझे इस व्यू के साथ फोटो चाहिए फिर. सो आई हैव गॉन फ्रॉम द पर्सन हु पोस्टेड लाइक 70 पिक्स इन एन एल्बम आफ्टर लाइक अ 3-day ट्रिप टू समबडी हु डजंट इवन, मैं मतलब खुद का भी फोटोज नहीं लूंगा अभी, उतना मेरा हो गया. सो दैट्स अ पर्सनल चेंज इन मी. But yeah, one more thing that I would like to say on this topic, and I'll hand it over to someone. But last year I was traveling in North Cascades National Park, was US और Canada के border के काफी पास है, North Pacific Northwest में. And we were just looking for some places to hike. अच्छे trails अगर कहीं में मिल गए तो. And there was this place जहाँ पे lakes थे ऐसे काफी height पे, and it was supposed to be very pretty. गूगल मैप्स पे दिखा, we just went there. रोड बहुत ट्रिकी था, कच्चा था, घाट का था, and it was a little bit scary, very small road, and if you have an SUV थोड़ा डर लग जाएगा. हम पहुंच रहे थे 80% ऑफ द वे पहुंच गए, बट फिर भी लग रहा था आगे जाना चाहिए, कि रोड ट्रिकी लग रहा है. We just kept going. After we were almost there, there was a wooden sort of a board hung on a tree जिसमें लिखा था, please do not put this place on Instagram. And we're like, okay, what is this all about? हम लोग पूरा ऊपर चढ़ के गए. आफ्टर क्लाइंबिंग बाय आवर कार फॉर लाइक 30-40 मिनट्स, ऊपर जाके 2 छोटे-छोटे लेक्स थे वहां पे. एंड इट वाज अ वेरी प्रिटी साइट. इट वाज अ कैंपिंग साइट. तुम कैंप कर सकते हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, रिजर्वेशंस ओवरबुक नहीं होते, कुछ नहीं होता. बट इट विल ओनली वर्क इफ सब लोग वहां पे जाने न लगे. उन्होंने बोला था कि ये जगह के बारे में सोशल मीडिया पे मत डालो. एट दैट टाइम आई वाज सो ग्लैड कि ठीक है, यहाँ तक आए ट्रैवल करके, अभी एक जगह पता तो हुई वहां जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग. सो या, आई मीन अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बोलो तो सोशल मीडिया हैज काइंड ऑफ हर्ट दिस अ लिटिल बिट, क्योंकि पार्टली बिकॉज मुझे पसंद नहीं है. बट या, आई मीन
I'm seeing people who have different point of view, so I guess I'll shut up for now. क्या बोलना चाहता है वल्लभ? नहीं नहीं यार, तू बोल, ऐसा कुछ नहीं, मैं आई विल हैव माय चांस. यार मेरे को भी लगता है सोशल मीडिया इज अ boon to go and look at options and places to visit. I'm the last person who likes to take pictures and videos and post. मेरे को बचपन में मैंने देखा है, मेरे कहीं भी जाओ तो वहां तब छोटे छोटे कैमरास आते थे ना, और पूरा टाइम उसमें लगे रहो. तो my dad and I've always seen them like very busy with that and not focus on like actual things happening and sites. तो मेरे को हमेशा से लगता था कि मतलब क्यों, मतलब I am not interested in recording memories. I'm rather interested in living them. So abhi bhi I don't like to like take pictures. It will be nice if somebody else is just there in the background who's taking pictures of me enjoying, so I can look at them later. But उतना मेरे को ना पेशेंस है ना इंटरेस्ट है कि मैं खुद के फोटोज या खुद जो दिख रहा है उसके फोटोज लूं. वो आता नहीं है, आंखों से जो बेस्ट दिखता है वही दिखता है. और बट आई रियली अप्रिशिएट कि लोग कर रहे हैं अपने लिए, तो आई कैन लाइक आई एम द कंज्यूमर ऑफ द कंटेंट, आई एम नॉट द क्रिएटर. मतलब इस पे आई वुड लाइक, मतलब आई वुड लाइक say I have similar kind of view with respect to both Nikita as well as Shell. कि like pictures zaruri है, like kind of mixed in between both of them. कि like pictures zaruri है, but I also like, I do click photos from my phone काफी हद तक. Shell तो like in general like he likes clicking photos, so he does a lot of it. But I do click some photos from my phone, and उसने काफी सिखाया भी how to click better photos also. So that also has helped. But in general, I don't have like that affinity to post on any social media platform. I do post a lot of stuff on social media, random stuff, but I don't post like ऐसा like especially travel or ऐसा like an odd photo यहाँ वहाँ. Sometimes I would like if I'm there and अगर ध्यान में आया तो I'll just put it there, but more like a story kind of stuff and there just as a pin करके कभी एक आध डाल दिया वैसा. But yeah, that's just like yeah. But then yeah, one amazing thing with respect to that is it has helped me meet sometimes randomly people in different cities. Like coincidentally, like one of our good friends from college, she's a senior. So I just made a post, and surprisingly, she was also like, she was doing a master's in Ann Arbor, and then she was in Miami with her grad school friends, and I was with my grad school friends, and we just realized that we are in the city around the same time, Miami में. So I practically met her after 3 years in Miami, just because we both shared posts about the place, and it was just one odd photo, one or two photos. So it's just like sometimes geolocating, or like not immediately, but around the day of your travel, sometimes if you can geolocate yourself, sometimes you get to bump into old good friends, acquaintances, whatever. Like, so that is something quite fascinating जो मुझे लगता है. But हाँ, मतलब indiscriminate amount of just clicking photos and just being lost clicking photos, that does actually take away like the joy of being in that moment. तो आप थोड़ा बहुत खींचो मेरे को इस पे एक बोलना है कि हम लोग जब इंडिया में थे और ट्रैवल कर रहे थे, एंड दैट वाज द सेम फेसबुक टाइम जो गिरनी ने बोला था, एंड वी वर ऑलमोस्ट गोना स्टार्ट आकाश टेम्बेकर फोटोग्राफी. आकाश टेम्बेकर के काफी इंटरेस्टिंग फोटोज थे जो उसने खींचे हुए थे. बट आई थिंक गलती से, सेकंड पॉइंट, मतलब नो टैलेंट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, गलती से अच्छे आए थे. हाँ, देन आकाश टेम्बेकर को मेरे को बहुत सारी फोटोग्राफी सिखानी पड़ी क्योंकि मेरे फोटो खींचने थे. So I need to teach him ऐसे different skills क्योंकि मेरे को फोटोज चाहिए थे मेरे. तो हाँ, but like I think photos are like not necessary, but you just need them wherever you need them. It's just for yourself. ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे डालना है या किसी को दिखाना है, नहीं. It's like your personal collection. And then आज ही मेरे को किसी ने पूछा कि do you have a, like I told them कि मेरा interest is photography. They're like कि oh do you have a gallery somewhere or या तेरा profile है क्या? I was like नहीं, मेरे लैपटॉप में ही पड़े हैं. Probably जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो I'll create some gallery.